Good evening and welcome to the session number 33 from the chapter of laws of motion. The topic is the friction basics and this is the session number 5 from this topic. The subtopic is how the friction affects the motion of three stacked blocks. So based on this subtopic, I have taken one example in which three stacked blocks are lying as shown in this figure. So the 10 kg block is lying on the frictionless surface and the 5 kg block is lying on this 10 kg block, and the coefficient of friction at the interface of 5 kg and the 10 kg block is equal to 0.5. The 2 kg block is lying over the 5 kg block, and the coefficient of friction at the interface of the 2 kg and the 5 kg block is equal to 0.6. So here we have to find the value of the applied force, that is the force F which is applied to this 5 kg block, so that all these three blocks move together. तो ये तीनों ब्लॉक सभी मूव करेंगे एक साथ जब तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर F1 क्या है, F1 इज दी force of friction at the interface of 2 and 5 kg block, and F2 is the force of friction at the interface of 5 kg and 10 kg block. So F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले. So F1 is equal to mu into n. So mu is equal to 0.6. N is the normal reaction. So normal reaction is equal to m into g. So at this at the interface of 2 kg and the 5 kg block, m will be equal to 2 kg. And here I will be taking the value of g equal to 10 meter per second square. So this is equal to 0.6 into 2 into 10. The normal reaction is equal to m into g. So this is equal to 12 Newton. So F1 is equal to 12 Newton. So this is the force of friction which will be generated when the external force F is applied on the 5 kg block. Now, similarly, the force of friction which will be generated at the interface of 5 kg and the 10 kg block, this will be equal to mu into n. So mu here is equal to 0.5. Normal reaction is equal to m into g. So at this interface, m will be equal to 2 plus 5, that is 7 kg. 7 into 10. So this is equal to 35 Newton. So here I will be writing the value of F2 which is equal to 35 Newton. So the force of friction at the interface of 5 kg and the 10 kg block will be equal to 35 Newton. Now friction what the friction does? The force of friction opposes the relative motion. इसका मतलब क्या है कि when an external force is applied to this 5 kg block, then ये ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो आगे मूव करने की है. सो ये दो आपके जो 2 kg ब्लॉक है और जो 10 kg ब्लॉक है, they will be left behind. So what will happen? What this force of friction, that is F1 and F2, ये क्या करेंगे? F1 will first of all it will try to drive this 2 kg block in the forward direction, because 5 kg block is moving in the forward direction. It has a tendency to move in the forward direction. So 2 kg block is being left behind. So the force of friction, that is F1, will the direction of the force of friction on the 2 kg block will be in the forward direction, and the same force of friction will act on the 5 kg block in the backward direction, because ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 2 kg ब्लॉक को 2 के ऊपर आगे इसलिए लगेगा बिकॉज दिस ब्लॉक इज गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड, और 5 kg ब्लॉक क्योंकि आगे जा रहा है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको पीछे खींचेगा. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 will, the direction of the force of friction will be in the opposite direction of the applied force for the 5 kg block, and it will be applied, or it will be applied on this 2 kg block in the forward direction, so that both these two blocks move together. अब इसी प्रकार से जो F2 है, F2 क्या होगा?
यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, सो F2 will act in the opposite direction of the external force for this 5 kg block, and for the 10 kg block this F2 will be acting in the forward direction, so that both these two blocks move together. Because ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक पीछे छूट रहा है, ठीक है. सो जब ये वाला ब्लॉक पीछे छूटेगा तो F2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके ऊपर आगे लगेगा, and at the same time the same force of friction will act in the backward direction for the 5 kg block, so that ये वाला ब्लॉक जो आगे जा रहा है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना. सो इन दिस वे द नेट फोर्स ऑन द 5 kg ब्लॉक कितना हो जाएगा, F माइनस F1 प्लस F2. नाउ F1 प्लस F2 कितना हो गया, 12 प्लस 35, and this will generate some acceleration in the 5 kg block, so this is equal to 5 into A. Now F1, the force of friction on the 2 kg block will be equal to 12 Newton. So this 12 Newton will generate some acceleration in the 2 kg block. So MA will be equal to 12 Newton, and this will be equal to 2 into A. So here the acceleration, let us say I am just denoting this, the acceleration of the 2 kg block as A2. So A2 will be equal to 6 meter per second square. Now let us calculate the acceleration of the 10 kg block. So इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, 35 न्यूटन. So 10 into, let us say I am just denoting the acceleration of this 10 kg block as A10. This will be equal to 35. So A10 कितना हो जाएगा, this will be equal to 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ the acceleration of the 2 kg block, and this is the maximum acceleration. This force of friction, ये जो हमने वैल्यू निकाली ये मैक्सिमम वैल्यू है, and this is variable, ठीक है. ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि जनरेट हो सकता है, ठीक है. एंड सो दिस इज द मैक्सिमम, the maximum acceleration of the 2 kg block will be equal to 6 meter per second square, and the maximum acceleration of the 10 kg block will be equal to 3.5 meter per second square. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें वो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द F फॉर विच बोथ दी ऑल दी 3 ब्लॉक्स मूव टुगेदर. तो तीनों तभी मूव करेंगे जब तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. नाउ इसका एक्सेलरेशन है 3.5. अब जो टॉप वाला जो ब्लॉक है 2 kg का, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, 6 है. नाउ अगर 5 kg ब्लॉक और 10 kg ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन आपका 3.5, इसका तो 3.5 है, अगर इसका भी 3.5 हो गया, सो बोथ दीज टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर. दे यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस ऑफ 5 kg एंड 10 kg. सो these two blocks can be considered as one single block. So ये दोनों अगर 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो what will happen, the force of friction at the interface of 2 kg and this 5 kg block, ये क्या करेगा, the force of friction, the value of the force of friction will get reduced to the extent such that the acceleration of this 2 kg block also becomes equal to 3.5. So the common acceleration मेरा क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर ये एक्सेलरेशन है तीनों ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक्स मेरे आगे मूव कर जाएंगे. सो यहां पर हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं. F विल बी इक्वल टू -47 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 into 3.5. तो दिस इज इक्वल टू 15 sorry 5 20 25, that is equal to 17.5. So the magnitude of the external force will be equal to 47 plus 17.5 newtons, and this is equal to 64.5 newtons. So अगर हम 64.5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 5 kg ब्लॉक के ऊपर, then all these 3 blocks will move together, and at the same time the common acceleration will be equal to 3.5 meter per second square. So thank you very much for joining this session. In the next session I will be continuing with the same topic of the basics of friction, but the question will be slightly different from what we have studied today. So till then, have a nice day. Bye.